हेलो गाइस। आई होप आप सब ठीक है। हमने ईमेल मार्केटिंग मिनी सीरीज के पार्ट 1 में देखा कि ईमेल मार्केटिंग के स्टैटिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, राइट। और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ टू राइट गुड एंड इम्पैक्टफुल ईमेल्स विद कैची सब्जेक्ट लाइन्स। गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इससे मुझे आपको और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की मोटिवेशन मिले। सो गाइस, मैं स्वरा फ्रॉम टेक अमरेंद्र चैनल आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज का ये ईमेल मार्केटिंग मिनी सीरीज पार्ट 2, जो है बेसिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ टू राइट गुड एंड इफेक्टिव ईमेल्स दैट कन्वर्ट्स। या गाइस, दैट लिटरली कन्वर्ट्स। सो आपके व्यवसाय में ईमेल मार्केटिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है और यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ मूल बातें याद रखने की आवश्यकता है, जो कि हम इस सीरीज के पार्ट में देखेंगे। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको गूगल पे प्रूफ दिखाना चाहूंगी। ROI जो हमने बात की कल, बात की इसके पहले सीरीज में पार्ट 1 में ROI ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आप खुद ही देख लो कि ईमेल मार्केटिंग का ROI जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इज वेरी हाई एंड प्रॉफिटेबल कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजमेंट मीडियम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी, यहाँ पे टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, वीडियोस, डिस्प्ले, पेड सर्च, अफिलिएट, सबके मुकाबले ईमेल मार्केटिंग का ROI सबसे हाई है। सो गाइस, तो आप देख सकते हो आज के वीडियो का एजेंडा जो कि है व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, देन रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग, रोल ऑफ ईमेल्स इन मार्केटिंग पे हम बात करेंगे। देन हम देखेंगे स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव मेल्स ईमेल्स दैट लिटरली कन्वर्ट्स। ऑलराइट, सो we'll see the first one, what is email marketing. या सो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। सो आप देख पा रहे हो चार्ट में, क्या। So, in simple terms, we can say that email marketing is nothing but it is the process where you have the email list, yeah, of consumers or customers like 5K, 10K, 20K email list, or even more, wherein you can again and again on a timely basis send valuable or promotional emails to those customers on or to those email IDs. So, it is a process to drive sales. ये ultimately sales drive करेगा, right? And then which ultimately leads to increase the revenue, ROI. So this is what email marketing is. Guys, one more thing, there can be many different strategies, like you can send them then two or more valuable content email, and then the third one or the fourth one will be a promotional email, to increase the rapport relationship between the customer and marketer. So in email marketing, we can use automation softwares to promote our product or similar product on timely basis to the audience. And this we will be going to see in the later videos, later series. Along with that, we will also study the types of email marketing, advantages of email marketing, process of email marketing. Yeah, I will be revealing few tricks of doing email marketing effectively. Yeah, and many more things we are going to see in upcoming series. Alright, so now we'll see role of emails in marketing. As you can see on the screen, the first is best medium to drive product sales. So आप customers और subscribers of newsletter को products के मेल भेजकर बता सकते हैं अपने latest products के बारे में और sales generate कर सकते हैं, या फिर second, to advertise new offers and deals. So आप यहाँ अगर कोई फेस्टिवल या ब्लैक फ्राइडे डील्स ऐसा कुछ आप दे सकते हो तो आप 50% ऑफ या कोई अट्रैक्टिव डील्स कस्टमर को भेज सकते हो ताकि सेल्स जनरेट हो या लोग
से वो डील्स ग्रैब कर सके और हमें प्रॉफिट हो सके. ओके, देन द थर्ड इज कन्वर्ट सब्सक्राइबर्स इनटू कस्टमर्स. जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब तो कर लेते हैं ना, और इनको इंफॉर्मेशन भी लेते हैं हमारे न्यूज़लेटर से, लेकिन वो कस्टमर्स नहीं होते. तो उन्हें हम कस्टमर्स में कन्वर्ट करने के लिए नए नए ऑफर्स या इंटरेस्टिंग ऑफर्स, कैची ऑफर्स देके कस्टमर्स बना सकते हैं. देन लास्ट लास्ट इज शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट. सो इसमें हम हमारे ब्लॉग्स या यूट्यूब वीडियोस हमारे जो भी होंगे वो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें नॉलेज मिले हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ ईमेल्स इन मार्केटिंग. सो नाउ हम देखेंगे स्टेप्स टू राइट एन इम्पैक्टफुल ईमेल. सो इसके स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले स्टेप है सब्जेक्ट लाइन्स. सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सब्जेक्ट लाइन भी प्रॉपर नहीं है तो कोई कस्टमर आपका मेल पढ़ेगा ही नहीं. So be as specific as possible. One word subjects such as hi, hello, or your or FYI for your information. These are not informative at all. Yeah. So don't give the reader an idea of how important you have to give the reader the idea of how important your message is. Like it should show uh, urgency and also invoke curiosity among the customers to open the mail and read those mails. So second is greetings or salutation. So here, don't just start your text and don't stop at the end without a polite signature, I would say. मेल्स में ग्रीट करना भी इम्पोर्टेंट होता है. जैसे हम हमारे सीनियर्स को बोलते हैं हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, वैसे ही मेल्स भी प्रोफेशनल, हमारा प्रोफेशनलिज्म दिखाता है. सो वी हैव टू ग्रीट बाय सेइंग डियर प्रोफेसर कुमार और हेलो मिस्टर मुखर्जी, और वी कैन से हाय मेरी जैन, लाइक दैट वी हैव टू सल्यूट or greet. So if you don't know the name of any person or any concerned person to whom you are mailing, so you can write to whom it may concern, so, or dear members of the selection team, like that. Next comes email body. So over here, while drafting body of an email, keep the tone professional because all communication reflects on the image of your company. Do line breaks between the salutation and body, and between the body and closing signature lines as well. तो ये क्लोजिंग सिग्नेचर क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में. और याद दोस्तों, जो फॉन्ट्स हम यूज करेंगे तो इजी टू रीड फॉन्ट्स यूज करना है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या एरियल. ओके, और एक बात, डोंट यूज अ कलर्ड फॉन्ट और HTML. ऑलराइट. So a major goal is to ensure that your recipient has no trouble reading the email. Now comes closing sentence. So जैसे हमने देखा होगा मेल्स में लास्ट लाइन लिखी होती रहती है like awaiting your response, या like this. So ऐसा जो ऐसे लाइंस जो होते हैं वो दिखाते हैं क्लोजिंग सेंटेंस और कॉल टू एक्शन. Then comes the sign off or signature. So your closing is extremely important because it lets the reader, okay, to know who is contacting them. So यहाँ आप लिख सकते हो warm regards, best regards, kind regards, sincerely, okay, और उसके बाद आपका नाम and designation. हम आगे सैम्पल ईमेल्स में देखेंगे, डोंट वरी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन. सो दिस सब्जेक्ट लाइन में नाम डाला है एंड देन लिखा है थैंक्स फॉर बीइंग अ लॉयल मेंबर. सो ये ऐसे कैचे सब्जेक्ट लाइन देखने के बाद मेंबर्स या कस्टमर्स जो होंगे, दे विल दे विल willingly want to open the mail and read what exactly it is.
It generates curiosity among the customers. Okay, so यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट इनफॉर्मल ईमेल जो हम दोस्त को, रिलेटिव को, फैमिली में लिखते हैं. सो दिस इज सेंडर. ओके, फ्रॉम, देन आता है टू, देन आता है अपना greetings or salutation, then comes the whole body, then the closing or we can say sign offs. So this is formal email. So again to, then from जिसे हम लिख रहे हैं, from जिस जिससे हमें मिल रहा है, then subject line should be catchy. Okay, then comes greeting, then comes mail body, then sign off. ओके, सो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लाइन जो है, मीटिंग अबाउट न्यू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड डेट. So it shows the curiosity or informational, or it shows the urgency. Alright, या दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, I would like to inform you again about the course we have started. That is the most awaited digital marketing course for all of you guys. So, guys, feel free to contact on the numbers visible on your screen and face your career with confidence. Thank you, guys.